Hello everyone, welcome to Abhyarthi IAS, Day 9 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. With reference to National Startup Advisory Council NSAC, consider the following statements. The non-official members of NSAC are nominated by the central government. The term of non-official members of the council is for 2 years. The Union Minister for Commerce and Industry acts as the chairman of the National Startup Advisory Council. How many of the statements given above are correct? So the answer would be C. All of the statements given above are correct. Recently, government reconstituted the National Advisory Council. नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 2 year term अभी कंप्लीट हुई थी. So the central government nominated the non-official members, and these nominated non-official members, they represent various stakeholders, which you can read by pausing the video. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which is a department of Ministry of Commerce and Industries. It constituted the National Startup Advisory Council in 2020 to advise the government on measures needed to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startup in the country. As per the government notification, the term of non-official members of National Startup Advisory Council, it shall be for a period of 2 years or until further orders, whichever is earlier. The eighth meeting of National Startup Advisory Council, it held under the chairmanship of Union Minister of Commerce and Industry. Here is some additional information given about the National Security Advisory Council. So I request you to pause the video and इसको thoroughly एक बार read कर लो. Next question. In the context of Indian economy, internationalization of Indian rupee may result in which of the following? Potential increased volatility in the rupee's exchange rate in the initial stages. Obligation to meet the global INR currency demand may come in conflict with domestic monetary policy. Lower cost of capital due to better access to international financial markets. High signorage benefits and reduced requirement of foreign exchange reserve. So we have to select which of the following is the correct answer. Answer would be D. It is the internationalization of Indian rupee will result in all of these events. So why internationalization of rupees was in news? Because recently a RBI group, it suggested that internationalization of rupee, it can cause excess exchange rate volatility. So last year एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप बनाया गया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसने रिपोर्ट किया कि दैट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी इट मे रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी इन रूपीज एक्सचेंज रेट, बट इट विल अकर इन इनिशियल स्टेजेस. एंड इसकी वजह से मोनेटरी इम्प्लीकेशंस भी होगी, बिकॉज एक कंट्री की कुछ ऑब्लिगेशंस होती है टू सप्लाई इट्स करेंसी सो दैट इट कैन मीट ग्लोबल डिमांड, बट दिस थिंग माइट कम इन कन्फ्लिक्ट विद द डोमेस्टिक मोनेटरी पॉलिसीज. एंड जो ये फिनोमिना होता है इसको बोला जाता है ट्रिफिन डायलेमा. Moreover, if internationalization of Indian rupee happens, then the currency might become more prone to external shocks as the flow of funds into and out of the country and from one currency to another, it will increase, and this might affect Indian economy. But we cannot overlook the benefits of internationalization of Indian rupees, because in terms of limited exchange rate risk, lower cost of capital due to better access to international financial market, high signorage benefits and reduced requirement of foreign exchange reserves, these benefits outweigh the concerns which were expressed by the interdepartmental group of RBI. Moreover, it has to be noted that internationalization of a currency, it is a long drawn process जिसमें काफ़ी continuous change लाने पड़ते हैं ताकि जो भी related associated concerns हैं challenges हैं उनको effectively redress किया जा सके. एंड interdepartmental group ने इसी को redress करने के लिए एक road map भी provide किया है. In this question, terms like Triffin dilemma and signorage were mentioned. So please एक quick research करके इन terms के बारे में थोड़ी सी information gather कर लें. Next question. Consider the following statements. Statement 1. Currently, India's central government's debt to GDP ratio is more than 50%. Statement 2. India's public debt to GDP ratio has drastically increased over the last few years due to fiscal slippage. So we have to select whether the statement 2 is the correct and best explanation for statement 1. So the answer would be
C. That is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. In the question we are given that currently India की central government का debt to GDP ratio is more than 50%, which is correct because as of September 2023 central government का debt to GDP ratio है 59.3%. It is slightly high as compared to the previous quarter, whereas the debt to GDP ratio of the state government is about 28% of the GDP. Why statement number 2 is incorrect? Just a second. Because as stated by the फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो या जिसे हम जनरल गवर्नमेंट डेट भी कहते हैं जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट का डेट आ जाता है इट हैज बेयरली इंक्रीज्ड. So in the question we were given that इंडिया का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, सो इट वुड बी इनकरेक्ट. इसमें कैच क्या है कि यूपीएससी ना ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करेगा कि ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड या फिर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. ऐसी जो एक्सट्रीम वाली टर्मिनोलॉजीज होती है इन मोस्ट ऑफ द केस दे आर रॉन्ग. तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि कोई भी चीज ड्रास्टिकली रिड्यूस या इंक्रीज नहीं होती है, चेंजेस हैपन ग्रेजुअली. तो दैट इज वाई द स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो जनरल गवर्नमेंट डेट है वो बेयरली इंक्रीज हुआ है. It was 81% in 2005 and it is now 84% in 2021, and in 2022 itself it reduced to 81%. बट अगर हम इसको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM के कंटेक्स्ट में देखें तो इट इज़ वे हायर, बिकॉज FRBM ने सजेस्ट किया था कि जो सेंट्रल स्टेट और उनका कंबाइंड डेट है वो होना चाहिए सेंट्रल का 40%, स्टेट का 20% और कंबाइंड 60%. But right now it is 81% combined debt, so it is way higher than FRBM limits. एंड इस हायर डेट का मेजर रीजन एक ये है कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पोस्ट पैंडेमिक टाइम में काफ़ी फिजिकल स्टिमुलस दिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पब्लिक डेट इंक्रीज हो गया. Additionally, there is some information regarding the debt to GDP ratio of each country. इनमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो डेट टू जीडीपी रेशियो है जापान का, फिर सेकेंड नंबर पे सिंगापुर एंड थर्ड पे यूएसए, एंड इंडिया कम्स एट 8th पोजीशन. तो इफ इन द एग्जाम इट इज आस्क्ड कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, तो इट वुड बी रॉन्ग बिकॉज इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज, अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज कम है अभी भी. तो इन दिस क्वेश्चन वन ऑफ द टर्म विच वॉज यूज वॉज फिजिकल स्लिपेज. तो प्लीज़ इसको एक बार सर्च करके थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना. Next question. Consider the following statements. Statement 1. India's overall trade deficit during the April to February 2023 period has increased compared to the year ago period. Statement 2. India's exports of goods in 2023 have been impacted by a slowdown in global growth. So we have to select whether statement number 2 is the correct and best explanation for statement number 1. So the answer would be D. That is statement number 1 is incorrect but statement number 2 is correct. Why statement number 1 is not correct? Because overall trade deficit जिसमें merchandise and services का भी trade deficit आता है, तो it is at 72.24 billion for the period of April 2023 to February 2024. एंड ये ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हुआ है पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल 116 यूएस बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था. तो लाइकवाइज स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट ये इंक्रीज हुआ बाय 6.89% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. बट इन द पीरियड ऑफ अप्रैल टू फरवरी 2023 जो गुड्स एक्सपोर्ट था इट वाज लोअर बाय 3.45% एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट ईयर. However, जो merchandise import थे for the same period of 2023, it was 5% lower than the imports which happened during the last fiscal year. One more important information is that during the financial year 2023, India की top export destinations में सबसे पहली आती है UAE, then Singapore, then Netherlands, China, UK, Saudi Arabia and South Africa. अगर इंपोर्ट सोर्सेज की बात की जाए तो रशिया सबसे नंबर 1 पे है, टॉप पे,
इट इज फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, चाइना एंड देन कोरिया नंबर 4 पे। तो जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ग्लोबल ग्रोथ में, इट हैज आल्सो इम्पैक्टेड इंडिया की एक्सपोर्ट की ग्रोथ, आल्सो ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। वेस्टर्न एडवांस इकोनॉमीज में जो टाइटनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिली है, उसकी वजह से भी स्लो डाउन इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड देखने को मिल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। Additionally, if we look at the recent data in February 2024, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट इट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 11%। एंड जो मेजर ग्रोथ के सेक्टर्स थे वो थे इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। साइमल्टेनियसली इंपोर्ट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली इन February 2024। और इंपोर्ट्स में भी कौन कौन सी आइटम है, जैसे कि गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन टूल्स, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस मेटल, केमिकल। तो इफ वी कंसीडर द डेटा ऑफ February 2024, तो जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूएस, यूएई, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, यूके, चाइना एंड बांग्लादेश। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूएई, सिंगापुर। तो ये डाटा जो था ये अप्रैल टू फरवरी 2023 का था। तो अभी क्या हो गया, अभी डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, क्योंकि अभी रिसेंट डाटा जो आ रहा है वो बता रहा है कि यूएसए है टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। एंड टॉप इंपोर्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं, स्विट्जरलैंड, यूएई, चाइना, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर एंड देन साउथ कोरिया। एंड अगर हम सर्विसेज सेक्टर में देखें तो सर्विस एक्सपोर्ट ने कोई ज़्यादा कंपेरेबल ग्रोथ नहीं शो की है, वाइल जो सर्विसेज इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू prompt corrective action framework, consider the following statements. The PCA framework was first introduced after 2008 global recession for scheduled commercial banks. Currently, government-owned non-banking financial companies (NBFCs) in India are subjected to PCA framework. Which of the statement given above are correct? So the answer would be D. None of the statement is correct. So prompt corrective action framework, it was implemented on the upper and middle layer NBFCs in October 2022. The framework is also extended to the government NBFCs except those which are in base layer from October 2024. So statement number 1 is not correct because PCA framework was introduced in 2002 in order to take corrective measures. So it was not introduced after the 2008 global recession as given in the question. PCA framework was basically introduced for scheduled commercial banks so as to enable a supervisory intervention at appropriate time and guide some financially weak banks which have high ratio of bad assets and lower level of capital adequacy to take remedial measures in order to restore the financial health. Statement number 2 is also not correct because ये फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑन एनबीएफसीज के ऊपर लागू होगा फ्रॉम अक्टूबर 2024, बट इन द क्वेश्चन वी वर गिवन दैट इट इज अप्लाइड करंटली, विच वुड बी इनकरेक्ट बिकॉज एट प्रेजेंट तो नहीं है ना ये अप्लाई, ये अक्टूबर 2024 से होगा। तो यूपीएससी भी ऐसे ही आपको फंसा सकता है क्वेश्चन में कि करंटली ये अप्लाई हो गया है या फिर ये मतलब किसी पहले वाली डेट से अप्लाई हुआ पड़ा है, तो इट वुड बी इनकरेक्ट। So in the PCA framework, restriction on dividend distribution and profit remittance, requirement for equity infusion by promoters and shareholders, leverage reduction, limitation on issuing guarantees or taking on contingent liabilities for group companies, these all limits will apply on those NBFCs, government owned NBFCs जिनके ऊपर PCA framework RBI के द्वारा लगाया गया है। Additionally, the NBFC sector is mainly dominated by non-deposit taking systemically important NBFCs, and they have a share of 85% in the total assets of the sector. इस कैटेगरी में मेनली नॉन गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, ऑल्दो इसमें फ्यू लार्ज गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं। Deposit taking NBFCs, they account for only 14% of the total asset of NBFCs. एंड डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को डोमिनेट करता है नॉन गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज।
One important fact about the deposit taking NBFC is that they are not insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of the RBI. बट आरबीआई ने फिर भी कुछ लिमिट इनके ऊपर लागू की है जिसमें these NBFCs which have minimum investment grade rating they shall accept fixed deposit from the public up to limit of 1.5% of their net owned fund and ये भी for the tenure of 20 to 60 month only एंड इस पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कैप किया गया है एट द रेट ऑफ 12.5%. वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच शुड बी नोटेड दैट एनबीएफसीज को मिनिमम जो क्रेडिट रेटिंग चाहिए होगी इट इज ऑफ BBB एंड ये क्रेडिट रेटिंग कौन देगा कोई भी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. So yes, this is all for today. Thank you for discussion. Please like the video and subscribe to Abhyarthi IAS.